Hello, my name is Gurinder Bedi. I work as an orthopedic consultant in Fortis Hospital, New Delhi. In collaboration with Healthcare at Home, we've set up a series of lectures which will hopefully cover some common topics that people complain of in terms of bone and joint pains. We hope you'll find these useful. We just kept it at the basic level of information to help you clear some doubts. So, neck and shoulder pain is often spoken together, mainly because the presentations are quite often very similar. जहाँ दर्द होती है वो भी तकरीबन सेम ही जगह होती है, दोनों कई बार इकट्ठे भी आ जाते हैं और ट्रीटमेंट भी कई बार इकट्ठी ही हो जाती है इन दोनों की. सो नॉर्मली पीपल कंप्लेन ऑफ पेन जैसे यहाँ पे या इस एरिया में. सो दैट इज अ कॉमन कॉज दैट पीपल ऑफन कम विद, एंड द रीजन व्हाई दैट इज अ कॉमन कॉज इज आल्सो बिकॉज द ग्रुप ऑफ मसल्स दैट सप्लाई the neck also go and supply the shoulder at times, and the nerve supply in इस area की दोनों की कई बार same या overlap कर रही होती है. The biggest thing that makes a difference is this common bone, which is a shoulder blade called the scapula, which is essentially the link between this part of the body and the arm bone. So a lot of problems which will involve movement of the scapula, which will make a difference on both of these. कितनी बड़ी problem है? Well, 7 out of 10 people in the world will have some problems in this life, and कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम. At any time as we speak and we talk right now, 1 in 10 adult is complaining of this kind of a pain. Half the people will have some neck pain during this year itself, and one in 20 people will have long-standing intense enough pain जो आपके काम को भी और आपके रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क पड़ सकती है. And the other problem is neck pain वापस भी आ सकती है. And about 50% of the people will be bothered again with this within the next 5 years. So overall quite a common problem. Presentation ज़्यादातर होती है कि हेड की मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक्स होती है, मसल टाइटनेस हो जाती है, एंड पेन कई बार सिर्फ रखने से भी दर्द हो जाती है. एंड द नेक की इम्पोर्टेंस ज़्यादा ये है बिकॉज इट्स स्मॉल ग्रुप ऑफ बोन्स जो एक दूसरे में कनेक्टेड है, बट दे सपोर्टिंग द वेट ऑफ द हेड विच इज कंसिडरेबल वेट ऑफ द हेड. And they have to allow different axes of movement of the head so that the head can get onto different places and the eyes can get onto different places, the ears can get to different sides to hear what is happening. So हमें दोनों चाहिए, strength भी चाहिए, flexibility भी चाहिए from this, and that is where we draw our problems in. So causes can be, you can have abnormal movements हो सकती है, injury हो सकती है, आपका posture खराब हो उसके कारण हो सकता है, you can have some diseases जिसके अंदर हो जाती है, tumors, muscle strain. So lots of causes are there. So this is the bones that I was talking about. 7 bones एक के ऊपर एक पड़ी हुई है, बीच में एक disc होता है. इन सब की connections are very important because the ligament जो connects them, that is very important because that stops them from moving extra. But unfortunately the small size and the excess movement makes them very vulnerable कि आपको malalignment का चांस रहता है, wear and tear का चांस रहता है. There are a lot of problems that come cervical radiculopathy, which happens because ये जो डिस्क होती है in between the vertebra के बीच में जो डिस्क होती है वो अपनी जगह से निकल जाती है और कई बार नस के ऊपर दबाव प्रोड्यूस कर सकती है. डिस्क के अंदर एक सॉफ्ट पोर्शन होता है, पल्पोसस कहते हैं, वो नॉर्मली निकल जाता है. As you can see, this is a normal kind of a disc. और ये डिस्क में जैसे कोई टीयर आया तो ये डिस्क का मटेरियल बाहर आ गया. The other problem जो नेक के साथ होती है, इंस्टेबिलिटी बन जाती है. तो एक्सेसिव एबनॉर्मल मूवमेंट शुरू हो जाती है बिटवीन टू वर्टेब्रल बॉडीज, एंड बाद में जाके उसके अंदर आर्थराइटिस वगैरह डेवलप हो जाता है. Why is it so common nowadays? Because we are putting a lot of stress in this area. One of the commonest reason for putting the stress is people who actually will be sitting in a sedentary job, जो डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अपनी कोई जैसे टेलीफोन असेंबल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोई काम कर रहे हैं. सो जब वो आगे झुकते हैं, यू कैन वेल इमेजिन कि अगर हम सीधा खड़ा हो जाएंगे तो तकरीबन 12 पाउंड का वेट डालेंगे अपनी बैक में. जैसे ही हम ऐसे आगे की तरफ झुक जाते हैं, द वेट इंक्रीज टू अबाउट 4 times वेट इंक्रीज हो जाता है. इसके कारण द कॉमन प्रॉब्लम दैट वी सी इज प्रॉब्लम्स नेक में, शोल्डर में, लो बैक में और रिस्ट के अंदर. दिस इज वन अदर थिंग विच इज वेरी कॉमन इज लोग अपने टेलीफोन्स वगैरह जब देख रहे होते हैं, कोई वीडियो देख रहे होते हैं, व्हाट्सएप SMS वगैरह कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली आगे की तरफ टिल्ट करते रहते हैं. सो यू कैन वेल इमेजिन कि नॉर्मल वेट मैंने बताया था 10 से 12 पाउंड के आसपास, पर जैसे ही आपने इतना ज्यादा बेंड कर दिया वो वेट तकरीबन 6 टाइम ज्यादा हो गया.
So the body was never going to take that much amount of weight which we are now putting on it at the wrong place. That's why this area becomes very, very prone to getting a problem. Another thing that we are seeing is the upper cross syndrome, which is basically chronic neck pain, mid back pain and shoulder pain. And ज़्यादातर होता है कि सारी मसल्स उनको टाइट लगती हैं, and then they normally get, जैसे नीचे hunch back या कुब कहते हैं, just at the base of the neck they start getting at, and धीरे धीरे करके the neck gets into this kind of a position. And normally this happens because prolonged stooping वगैरह के कारण या डेस्क में बैठने के कारण आपकी चिन आगे की तरफ चली जाती है और आपके शोल्डर्स और नेक भी आगे आ जाते हैं. उसके कारण कुछ मसल्स आपकी वीक हो जाती है, कुछ ये वाली मसल्स वीक हो गई और ये वाली मसल्स टाइट हो जाती हैं. उसके कारण the position becomes altered and people start complaining of very diffuse problem. कई लोग बोलते हैं मुझे सर मेरा चकरा रहा है बहुत ज्यादा, कई बोल रहे हैं कुछ लोग बोलते हैं हेडेक हो जाती हैं, कई लोग बोलते हैं सिर्फ आर्म की मूवमेंट्स उनकी बड़ी टाइट हो जाती हैं और रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं. Essentially what is happening is the body का posture is actually changing and that is make a difference. So rather than from this, which would be a normal thing, this is the kind of thing that people are doing, which is hunching forward. So this the body rather than being like this, ये जो मैं बोल रहा था नीचे hunchback सा यहाँ पे निकल जाता है, that causes the problem. It is not just related to the neck and shoulder. The problem is also the moment आप ये गए, आपकी यहाँ पे एंकल बनना शुरू हुआ, pelvis आगे की तरफ tilt हो जाता है to compensate for the bend in the back. So you get a Z kind of a deformity which happens because of this abnormal tilt. So rather than the straight line of weight bearing, इसका एंगल यहाँ ये आगे आया, चेस्ट पीछे गई, पेल्विस आगे आया, हिप्स पीछे की तरफ चली गई. One more problem that we see is people who use a lot of pillows or no pillows. तो if you use a lot of pillows, आपकी नेक हमेशा बेंट रहेगी एक तरफ, चाहे आप कैसे भी लेट जाए, आप साइड पे लेट जाए, आप बैक में लेट जाए. उसके कारण अगेन यू कैन हैव अ वेक अप विद अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स. सो यू नीड अ पिलो बट थोड़ा डिसेंट साइज का, नॉट टू मच. हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज अब बदल गई हैं. अब हम लोगों को कॉलर्स वगैरह, बेड रेस्ट वगैरह ये सब नहीं बोलते. हमें पता है कि जितनी ज्यादा फिजिकल थेरेपी एक्टिविटी करेंगे उतनी आप जल्दी ठीक हो जाएंगे. सो स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग is the way forward for these kind of pains. What about shoulder problem? Now I'm talking only specifically the shoulder problem. So shoulder की problem ये है कि it is a multi-directional joint. उसको आप आगे पीछे कहीं भी घुमा सकते हैं. So there is no joint which is as flexible, and flexibility comes with this kind of a flat surface. जो हमारी ball होती है shoulder आर्म बोन की, वो फ्लैट सरफेस पे बैठी होती है. उसकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जॉइंट अनस्टेबल भी हो जाता है इतनी मोबिलिटी के साथ. सो शोल्डर पेन इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन बिकॉज स्ट्रेन बहुत पड़ता रहता है आसपास की सराउंडिंग मसल्स, लिगामेंट्स में, और आसपास की मसल में टेंडनाइटिस वगैरह हो जाती है. मैंने आपको बताया इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और कई बार फ्रोजन शोल्डर, पिंच नर्व. सो काफी सारे कारण हैं जिसके अंदर हो सकता है. सो शोल्डर इज लाइक अ जॉइंट व्हिच हैज टू मूव at lots of bones. So आपकी कॉलर बोन के ऊपर ही मूवमेंट होगी, आपके शोल्डर ब्लेड पे मूवमेंट होगी, आर्म बोन में होगी, और आपकी शोल्डर ब्लेड में भी मूवमेंट होगी. इन सब में कनेक्शन है लिगामेंट्स और मसल्स का. इनमें से एक भी कड़ी में if there is a problem in even one of these, then you get the harmony gets broken down and you start to get a problem. So imbalance हो जाता है between the movers and the stabilizers. उसके कारण instability produce हो जाती है. So some of the problems which I was just telling you, एक तो impingement होती है जिसमें आर्म बोन जब एक लेवल तक आती है तो यहाँ पे आके वो मसल्स को दबाना शुरू कर देती है. ये मसल्स इस दोनों हड्डियों के बीच में दबनी शुरू, impingement कहते हैं इसे. धीरे धीरे करके impingement के कारण जो मसल्स होती हैं रोटेटर कफ की वो भी फट जाती हैं. उसके कारण भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है. सो दिस इज अ टेयर इन द मसल. ये कहते हैं इन्हें रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं. बार बार इम्पिंजमेंट होने के बाद इनके अंदर एक टेयर सा आ जाता है. सो अगर हम ट्रीटमेंट के तौर पे देखें, what you got to realize is most of the neck pains will not really come to anything serious at all. So it's a very small kind of a thing. बट अगर आपकी 6 हफ्ते से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सिवियर है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, या अगर आपका कोई रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग मतलब कि आपके बुखार वगैरह भी साथ में हो गया, आपका वेट लॉस शुरू हो गया, सर दर्द बहुत सिवियर हो गई है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो गई है, हाथों में नमनेस टिंगलिंग शुरू हो गई, देन यू मस्ट रियली सी अ डॉक्टर. वन थिंग इज फॉर श्योर, इफ यू डू प्रिवेंशन, दैट इज बाय टेकिंग माइक्रो ब्रेक्स. हर 15-20 मिनट के बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करोगे तो द चांसेस दैट यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम इज मच लेस.
So the good things that you can do is good posture, take your frequent breaks, अपने चेयर और डेस्क को आई लेवल पे लेके आइए, अपने लैपटॉप की स्क्रीन या अदर चीज पे. तो ये जो साइड में फोन रख के बात करना, दैट इज नॉट अ वेरी बैड थिंग. स्मोकिंग करते हैं तो जरूर गिव अप ऑन दैट. Don't carry too many heavy weights on the back because you'll always bend forward and sleep in a good position. You don't need to go to a gym or any special yoga center or something. You can actually do a lot of this stretch out just on your office chair and everything. So there are some of the simple stretches which I've shown to you. There are some specific exercises which you can do even on a chair in your house as well. So all these things are very simple. You just need some consultation. If you're not getting better, then normally your problems should get better given some time and exercise. Thank you so much. So we'll just take some questions which have come. So this is a question from Animesh Kumar. I'm having neck pain and I'm a diabetic since 4 years on medication. Will insulin help? Sugar is under control. Animesh, definitely you need to control diabetic. So it is not a question of will insulin help or not. If your sugar needs to be controlled. क्या करना है कंट्रोल का? Your physician, I'm sure, is in a good position to suggest. अगर आपका सवाल है कि नेक पेन और डायबिटीज का कोई रिलेशनशिप है, not too much. Indirect है because of weakening of muscles, weakening of nerves, but not directly. So control your diabetes. That is the first thing. Shweta Singh says I'm suffering from left shoulder pain. Shweta, the answer has got to be that you need to see whether the pain is more like with a shoulder disease or a neck disease or a combination. So if it's a combination kind of a thing, then it's a musculoskeletal disharmony between the neck and the shoulder. वो तो exercise वगैरह पे हो जाएगा. अगर weakness वगैरह है तो we need more investigations. Geeta Nair says I have left shoulder pain, muscle cramp, back pain, heel pain, knee pain too. Geeta, you should actually get your evaluation because आपकी बहुत multiple जगह पे pain है. You should be evaluated for inflammatory diseases like rheumatoid arthritis वगैरह. You should also look at your metabolic control, thyroid hormones वगैरह, diabetes, thyroid and deficiencies like vitamin B, vitamin D. इन सबको करना, even rule out anemia. So you need a few blood tests to see why you're having so much of a problem. अगर सब कुछ ही negative आ जाता है, then we can actually make a strategy for you. Ashok Agarwal says, I have shoulder pains in the last 3 months. Ashok, the answer to that is work on getting your shoulder blades की position ठीक करना. इतनी shoulder blade की positions आपकी ठीक हो जाएंगी, chest की exercise वगैरह करने से you start to get better. Arunava Banerjee says, how do I manage coccygeal pain and type 2 diabetes? Arunava, there is no correlation between diabetes and coccygeal pain. Coccygeal pain is common even in the general population. The answer to this is if you actually sit on softer surface, avoid too much of sitting at one place for too long, avoid leaning backwards when you're sitting, then normally most of the problems can be managed. So you need to relieve the pressure on the coccyx and diabetes can be managed separately. So this is a question that I didn't answer last time. Mukhtar Mullah says, I'm 50-year-old, cervical pain 3 years, movement is very slow, posture not straight, stiffness in whole posture. I also have stress and anxiety disorders. Please suggest. So Mukhtar, you should ideally be looking at a combined approach. So the combined approach will include things like getting a psychologist or a psychiatrist to help you deal with the anxiety, stress. अपनी तरफ से try to work out what are the things which are causing you more problem. Maybe a job change, maybe a domestic situation might be a problem. Plus, you also need to get in touch with whether it is a yoga person or some aerobics or exercise person. Increase your level of physical activities. Make sure there is no blood disorder which you're like a sugar or something which is not got to be improved, and work on your exercise and physical mobility jada. Most likely that will make a difference on your pains. Thank you so much.